Hello everyone and welcome. My name is Ms. Gargi Chaudhary and in today's class we're going to learn about the Bohr's postulates and Bohr's theory. ठीक है, इसके बाद का जो लेक्चर होगा ना वो क्वांटम नंबर्स पे होगा जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो होप यू आर ऑल वाचिंग ऑल द वीडियोस एंड अटेम्प्टिंग द फ्री टेस्ट दैट्स available on the Griffin Educare app. Okay, Griffin Educare is also starting the batches, all the batches starting from 1 June. Okay, till then जो बेसिक केमिस्ट्री का सीरीज अपना चालू है दैट विल बी कंटिन्यूड फॉर इन द होल मे मंथ. साथ ही साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट के फ्री टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट पेपर्स भी अपलोड हो जाएंगे. सो जस्ट वॉच द सीरीज एंड अटेम्प्ट द फ्री टेस्ट सो दैट जब 1 जून से whoever the people that will join the Griffin Educare कंसेप्ट समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी. ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम बिफोर गोइंग ऑन टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल और बोर्स पोस्टुलेट, देख लेते हैं कि रुदरफोर्ड का जो पार्टिकल स्कैटरिंग पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये क्या था, उसका ड्रॉबैक्स क्या थे. सो बिफोर जंपिंग ऑन टू द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक थोड़ा सा उसका recap देख लेते हैं. So the experimental setup was kind of like this, in which a block of lead was kept. Alpha rays were passed through a thin gold foil. अब यहाँ पे gold foil ही क्यों ली थी? क्योंकि gold foil was the only metal foil in which it was 1000 atom thin. ठीक है, so hence gold foil was chosen. Alpha particle was passed through it and following observations were made. Following observations were most of the alpha particle passed through the gold foil. Inference जो observation से निकाला था, that means very large empty space is present in the atom. Some other observations that were observed were some of the alpha particle got deflected by little angle and some of the alpha particle were deflected by large angle. The inference of these two observations were presence of a positive charge at a concentrated place, that is in the middle or somewhere concentrated somewhere at one place. So hence Rutherford stated that the atomic structure represented the solar system. Just like sun is in the middle and planets are revolving around the sun, similarly nucleus in the middle and electrons are revolving around the nucleus. Such was the prediction of a Rutherford that the atom resembled the solar system. Okay, but some were the drawbacks of this system, and those were during the period when Rutherford actually gave his alpha scattering experiment at that time, जो अपने पढ़ा था classical wave theory पढ़ी थी, and according to that classical wave theory electromagnetic radiations जो है continuously energy का absorption होता है, continuously energy का emission होता है. तो अगर यहाँ पे according to the Rutherford न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं and there is a continuous emission of energy, that means जब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus emitting the energy, that is the energy is getting lower and lower in the electron, it will try and collapse into the nucleus. क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी एनर्जी ही नहीं बची होगी, तो एट लास्ट जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दैट विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस. लेकिन ऐसे होता है, ऐसे एटम में होता है, ऐसे नहीं होता है. तो फिर अब अगर ऐसे नहीं होता है तो लेट्स कंसिडर कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, तो ये वाला एक थ्योरी कंसिडर करके देखते हैं. लेकिन अगर ये वाली थ्योरी कंसिडर करके देखेंगे तो अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन and a nucleus will have an electrostatic force of attraction, and due to this electrostatic force of attraction what will happen, again this both will have an attractive force and somehow electron will fall into the nucleus and again the whole atom will collapse. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी into the orbit and the capacity of each orbit to contain the number of electron, ये रुदरफोर्ड का मॉडल नहीं बता पाया. So this was a great failure of a Rutherford atomic model, right? Hence came the Bohr model of atom and Bohr's postulate. Following with the postulates, first postulate was, अब ये डायग्राम को ना पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना. फर्स्ट postulate था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमेगा. ठीक है, it revolves around the nucleus. Second postulate was the number of orbitals were named as K, L, M, N, O. Third postulate was each orbital has its own specific energy. Okay, each orbital has its own specific energy in such a way that E5
is greater than E4 is greater than E3 is greater than E2 and is greater than E1. Okay, increase in the increasing order of the energy. तो ये हो गए 3 postulates. उसके बाद का जो postulate है, during the revolution during the revolution of the electron into the orbit, there is neither the loss of there is neither the loss of energy nor the gain of energy. मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिट में जब रिवॉल्व होगा तो इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी देगा ना ही एनर्जी गेन करेगा. एनर्जी वाइज इट विल बी स्टेशनरी. Therefore, such an orbit is also called as a stationary state orbit, not because electron is stationary, but because energy exchange is null, energy exchange is zero. Okay, electron घूमते रहेगा, but electron will neither emit energy nor will gain the energy. Okay, hence it is called as a stationary state orbit. Okay, I hope this is clear. Fifth point जो है, only those orbitals whose angular momentum is in the whole number multiple of h by 2 pi. इसका मतलब है कि ऐसे ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होगा whose angular momentum is going to be the whole number, मतलब n is equals to 1 2 3 4. इसका और एक मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी बीच में प्रेजेंट नहीं होगा, कभी भी बीच में प्रेजेंट नहीं होगा. इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द ऑर्बिट. ओके, चाहे उसका एक्साइटेशन हो, डी एक्साइटेशन हो, जब भी उसका एक्साइटेशन होगा तब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ही जाएगा, बीच में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, second and the last one is the energy is emitted or absorbed when electron jump from one energy level to the another energy level. As the electron jumps from one energy level, that is from a lower energy level to the higher energy level after the absorption of energy, वो जो स्टेट में रहेगा that is called as excited state and which is a temporary state, and during the de-excitation जब वो वापस jump back करेगा to its original state by the emission of energy, that energy difference is denoted as del E is equal to E2 minus E1. Let's see this concept more clearly in this slide. Again, when electron is present in the original state, is present in the original orbit or in the original state, that state is called as a ground state. Electron will absorb the energy. After absorption of an energy, it will get excited to the higher energy state. This state we called it as the excited state. इन दोनों का energy difference जो है, we say it as a del E. ठीक है, इन दोनों का जो energy difference रहेगा, it is always going to be E2 minus E1. Okay, now energy we know, energy is equal to h mu. Okay, so according to this, E2 minus E1 is equal to h mu. We can write the expression as like this also. Another thing, now जब ओरिजिनली जो इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में है वो वाले स्टेट को तो अपन ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जिस स्टेज में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, वो वाले स्टेट को अपन एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. एक्साइटेड स्टेट इज ए टेम्पररी स्टेट ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज जंप बैक टू इट्स ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट लेवल. ओके, ड्यूरिंग जंपिंग बैक, जब वो जंप बैक करेगा टू इट्स ग्राउंड स्टेट, तब वो एनर्जी इमिट करेगा. ठीक है, अब जब ये इमिट एनर्जी करेगा, अगर यही इमिटिंग एनर्जी को अपन फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे स्ट्राइक कर दिया, इट विल गिव अ स्पेक्ट्रल लाइन. इट विल गिव अ स्पेक्ट्रल लाइन. और इसी तरीके से अपन ने स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्टडी किया था. ओके, बिफोर मूविंग ऑन एंड बिफोर रिकॉलिंग इट अगेन, विल सी दिस E2 minus E1 is equal to h mu. Now from the expression we know that C is equals to mu into lambda. From this we can get mu is equals to C by lambda. So this whole expression can also be rewritten as lambda is equal to CH upon E2 minus E1. Now अब जो मैंने बोला था कि जब डी एक्साइट होता है तब डी एक्साइटेशन के वक्त जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है, अगर वो एनर्जी को अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे स्ट्राइक कर दिया तो विल गेट अ स्पेक्ट्रल लाइन. तो इसी तरह से ढेर सारा ऑब्जर्वेशन और ढेर सारी स्टडी की थी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्टडी किया था. अब जैसे जैसे स्टडी किया था वैसे वैसे उन्हीं का नाम अपन ने वो शेल को दिया है. फॉर एग्जाम्पल
स्पेक्ट्रल लाइंस का लाइमन ने स्टडी किया इन द N1 शेल, सो इसीलिए यहाँ पे इसको बोला गया है लाइमन सीरीज that we have taken in the previous class. So n is equal to 1, that is K shell, is also called as a Lyman series in the only in the hydrogen spectrum. Okay, only in the hydrogen spectrum. Do not get it confused. Okay, so for the Lyman, n is equals to 1, that is K shell. This is called as a Lyman series. N is equal to 2, L shell. This is called as a Bohr'S series. N is equal to 3, M shell. This is called a Passion. याद रखने का तरीका L B P B P. Now whoever can remember from this, I तो remember from this, that is Lyman, Balmer, Passion, bracket, P fund. अब जैसे भी आपको easy लगता है उस तरीके से याद रखना है. Then after हर एक सीरीज कौन सा वाले रीजन में लाई करती है, तो लाइमन लाइज इन द रीजन ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन, देन बामर लाइज इन द रीजन ऑफ द विजिबल रीजन, देन आफ्टर पैशन ब्रैकेट एंड पी फंड लाइज इन विच रीजन, इंफ्रारेड रीजन. तो ये चीज याद रखनी है इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन. ओके, नाउ अभी फ्रॉम द बोर्स postulate and the Bohr's theory, we can also deduce the energy of electron in a particular orbital. ठीक है, for this we have a formula. Energy of an electron in nth orbital is equal to 2 pi square m e raised to the power 4 upon n square h square. Okay, where m is the mass of electron. Now mass of electron is what? 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. E is charge on electron. Charge on electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. क्योंकि यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का साइन आएगा, राइट. प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड. अब ये इतने तो जो वैल्यूज है ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, पूरा कैलकुलेट करके ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1312 बाय एन स्क्वायर. एक तो ये यूज करो, rather use this formula directly to calculate the energy of electron in the nth orbital. Okay, तो अगर इलेक्ट्रॉन is present in the first orbital तो उसकी एनर्जी minus 1311.8 ये रहेगी. For second orbital it is going to be minus 327.8 and for the third orbital minus 145.7. Directly learn this वाला formula. Okay, then after energy expression for the hydrogen like ion. For the hydrogen like ion मतलब ऐसे एटम जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सेम फॉर्मूला खाली z स्क्वायर इसमें ऐड हो गया. ओके, सो फॉर दिस वैल्यू विल कीप दिस एज कांस्टेंट 1312 अपॉन n स्क्वायर. खाली z स्क्वायर ऐड हो गया है. z स्क्वायर इज व्हाट? इट इज अ न्यूक्लियर चार्ज दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. ओके, अभी हाइड्रोजन लाइक आयंस मतलब हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अगेन हीलियम 1 पॉजिटिव विल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन द होल एटम. ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, लिथियम डाई पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पूरे एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन लाइक आयन को रिजेंबल कर रहा है. सो एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर द हाइड्रोजन लाइक आयन इट विल बी दिस. ओके, देन आफ्टर now energy level in the nth orbital is also over. Energy expression for the hydrogen like ion is also over. Last concept for today's class is Bohr's radius. अगर लास्ट वाले और किसी भी ऑर्बिटल से न्यूक्लियस तक डिस्टेंस, अगर ये वाले पूरे एटम का डिस्टेंस रेडियस गिनना है, सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज 0.59 n स्क्वायर. मतलब ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, किसी भी ऑर्बिट से अगर इसका रेडियस गिनना है, वी कैन कैलकुलेट simply by putting the orbit number. Okay, so that's all for today's class. Next class will be based on the quantum number.